Okay, students, good evening and welcome for Sir. another important topic which we have on the board. Student, the today's topic is very important and there are going to be questions in the paper on this. We are now going to talk about ethers. We have discussed with you alcohols, phenols, preparation and properties. Now we are talking of ethers, student, ethers. We are aware of what the ethers are, student. What is the functional group of ethers? We have shown you this type of oxygen, carbon on either side. So you get ether, student. The simplest ether will be then CH3O, or you write this. This is the bond line representation. What will be the IUPAC name of these students? We have told you. They are named as alkoxy alkanes. Yes, sir. Alkane is the parent from which ether is made. What I'm trying to say, supposing I have CH3, CH3. This is an alkane, students. Okay. Yes, What sir. I will do now, I will remove one hydrogen. If I show it like this, students, this hydrogen is being removed from here, and instead of this, what we are doing, you are writing something like this. O, instead of this, I am putting OCH3 is posing. So this is becoming now ether. This is out and you have got alkoxy. What group is this, students? If I write OR, then it is alkoxy group. Yes, sir. And this is derived from a alkane parent, that parent alkane. So we have a parent, student. The parent is alkane from which it is born. So it, when we will name it, the longest carbon chain, students, is the parent of this. Hmm. So that we take as alkane. Because I'm saying alkoxy alkane. Alkoxy alkane means the smaller carbon is alkoxy and the longer carbon is the parent of that. This is the child of alkane. So we are saying alkoxy alkane. So the longest carbon chain will be taken as alkane and the smaller will be taken as alkoxy group. And this is the IUPAC way of naming. The naming have to be given by IUPAC rules, which we have already told and discussed. We are not going into those details. We already know how to name these compounds and you can practice some of Yes, sir. yourself. So if you have something like what is this looking very like a butterfly, like a Hmm. butterfly. What is the name of this? Which ether is this? This is the bond line representation. How many carbon? One, two, one, two. So what is this? This is ethoxyethane, Yes, sir. and the common name is diethyl ether. Hmm. Diethyl. Common name is diethyl ether. This is alkyl group. This is alkyl group. So IUPAC name and common names are also important. Sometimes in the paper, certain compounds they only give you common names, which are very commonly used. There they will only talk of the common name. Student, they will give you the common name. So we have to be very careful. And important point, students, that they will give you common names also. Common names also when the compounds are uh, uh, simple compounds which are given in the books again and again repeatedly. They will not give the IUPAC name in the exam. They may give the common name. So we have to know the common as well as the IUPAC name. Yes, sir. IUPAC name is more easy to name because it is based on certain rules, which once we learn the rules, we can name it. Hmm. Okay, I'm not going into more details of this. Students can look into the nomenclature of ethers themselves. They have been discussed by us earlier. Now we are coming to the most important part, student, how the ethers are prepared. That is a big question for us. The preparation of ether is going to be very important for us. That how will we prepare ethers? Yes, sir. So what we have to do, students,
If I, okay, let me create some space here because this is an important point. Students, the preparation of ethers is important for us. Yes, sir. Hello? Hello, I'm Yes, coming. yes, fine. Just I'm going to talk about preparation of ether, students. See, one of the method is by the from the alcohols. Alcohols. First method which we have listed is by the preparation of ethers Yes, sir. from alcohols. I'm saying here I have represented a very important reaction, student. Actually, this mechanism will also be asked in the paper. Hmm. We are aware that alcohols undergo dehydration in the presence of protic acids. We are Okay. aware, student, what we know that alcohols, student, like RCH2OH. If I have an alcohol, what happens to them? The important reaction of alcohol is dehydration. Yes, sir. Dehydration of the alcohol. It takes place in the presence of the protic acid. Hmm. Now, what is the protic acid? Like H2SO4, it has H plus use of sulfuric acid. What sulfuric acid is a very good dehydrating agent. Hmm. H3PO4. These are good dehydrating agents. Agents. Student, they can remove water. They can remove water. Hmm. What they can do, they can remove water. You already know the properties of sulfuric acid. H2SO4, H2, H3PO4, they are very good dehydrating agent to student. Dehydrating agent means hydrate means water, D means remove water. Remover. Yes, sir. So they can remove water. Now the important point is that in this case, what happens, students? You have seen when the most important reaction which is likely to be asked in the paper is when we react ethanol. Hmm. This is my ethanol, student. I have shown here. What is this? Ethanol. Ethanol. If I react with H2SO4 at 443 Kelvin, students, see the temperature. Alkene is Yes, formed. sir. Alkene is formed. This example of dehydration. But at 413 Kelvin, the temperature is lowered. Then you are getting an ether. Huh. You are getting an ether now. This is a point to be noted, student. Very important. That just with the change of temperature, I am using H2SO4, I am using H2SO4. At higher temperature, elimination is taking place. There are two things which are happening, as we already discussed in alcohol also, elimination reaction. Yes, sir. One is elimination reaction. Student, what happens in elimination? Loss of water. Uh, Here, loss of H2O takes place and you are getting alkene. So when ethanol is reacted with H2SO4 at 443 Kelvin, you are getting ethene. okay, sir. This reaction we have discussed when we talked of dehydration of alcohols. If you remember, I discussed the elimination reaction of alcohols. Yes, But sir. when ethanol is reacted with H2SO4 at 413 Kelvin, ether is obtained. Student, this is an important question has been asked in the paper. So I begin this with the first question of the ether. This has been asked 2 years back also. What the question says, write the mechanism. You should be able to note down everything because this is a very important question, can be asked again. Write the mechanism for conversion of C2H5OH into C2H5O C2H5, ठीक है, Yes, sir. in the presence of acid H2SO4, ठीक है. So this is important. We have mentioned the conditions also, student, here. Conditions also. Actually, there is a big difference between the two reactions.
When I say mechanism, I have to write the steps, students. Yes, sir. What I have to do? I have to be able to Write the write the steps. steps. And this question was given 2 marks Hmm. in the exam, board paper. So this actually, basically it involves 3 steps. And this is nothing, I'm saying this is actually a nucleophilic bimolecular. This is example of nucleophilic bimolecular reaction. Very Yes, sir. important. You have seen SN2 in haloalkanes. Did we do that? Yes, sir. Therefore, in this, there should be a nucleophile student which will attack the alcohol. And Hmm. we have told you in the alcohol, they can act as electrophiles as well as nucleophiles. So there has to be nucleophile will attack where? I say nucleophilic. Nucleophile is negative. Yes, sir. It will attack where? It will attack only when there is a positive carbon. Yes, sir. Electrophilic carbon should be there. Some delta positive charge should be there on the carbon. Then only the attack is possible. And Hmm. if I say that I have only ethanol, see in this reaction what I have, CH3, CH2 in a more better term. Now I'm putting it like this. This is my ethanol. Okay, You sir. have very large molecules of this Hmm. and you have added H plus. And the temperature is how much? 413 Kelvin. And what is the product, student? CH3, CH2O, CH2, CH3. This is the reaction. Okay, sir. Now I have to write the mechanism of this reaction. And as I know that as such, this alcohol is a weak electrophile. Okay, sir. This carbon, oxygen is negative, this is positive, but the positive charge is very small. And if it has to be attacked by this OCH2, CH3, this is also not a very strong nucleophile. So in such cases, student, why do we add H? Because H plus will protonate the alcohol. Yes, sir. And when H plus will protonate the alcohol, student, then it will become, this carbon next to this will become more electrophilic. How Hmm. we are going to show it? So now we are going to write the mechanism of the reaction. Okay, sir. If a question is given simply this, then I write this answer. If I say write the mechanism, then I have to show the steps. And I am saying step 1. But I am talking now step 1, student. What is step 1? Step 1 involves protonation of the alcohol molecule. What will happen, student? Protonation Yes, sir. of alcohol. Where is the alcohol, student? CH3, CH2O, H. You add acid, H2SO4 will give H plus ions. Now Yes, this sir. oxygen has got lone pair of electrons. They can attach this H plus here. These are a lone Yes, pair of sir. electrons, student. You can see that what it will do. This H plus will go and stick here because it is in need of electrons, positive, and this has electron pairs. So Okay, sir. protonation takes place. Then what happens? CH3, CH2O, H, one H comes here and attaches. The result is this oxygen will become positive. Hmm. This is a protonated alcohol, student. This is called protonated alcohol. This Okay, reaction sir. will be very fast reaction, students. This is going to happen very fast. H plus immediately will go and attack the oxygen and will form a bond with it. But now oxygen is positively charged. If oxygen is positively charged, student, it is not a stable molecule Okay, sir. because oxygen is highly electronegative. So oxygen is hungry for the electrons. It needs electrons, students. The result of this is what? Now what happens, students? Step 2. The result is that this carbon, you can see that this the carbon which is there, student, this carbon, this will attract electron from here Okay, sir. because it is positive. This carbon will now become delta positive. It will become electrophilic, students.
What I'm saying, CH3, CH2, you have OH, H plus students, one electron pair is there. Now this will become delta positive because this is attracting the electrons towards itself. Positive means it will Yes, sir. attract more. Now this carbon is becoming electrophilic, and what will happen? This is already we have so much of alcohol in the reaction. Hmm. You have a lot of alcohol. Now this can attack this carbon. Okay, sir. This can attack this carbon because this carbon is delta positive. Delta positive. This is a lone pair of electron. It will hit this carbon. It will try to form a bond with this carbon, and the result of this will be oxygen takes these electrons and leave from here because H2O is a good leaving group. Students, what happens? H2O will leave. H2O is a good leaving group. Yes, sir. What will be the result of this then? You have CH3 students, you have CH2, and this, what is happening? This oxygen is going to come to this carbon, and what is with this oxygen? There is a hydrogen and CH2, CH3, Okay, sir. and water leaves. Water leaves. And what will be the result of this? If it attaches here, student, what is the result of this? There is a positive charge on this oxygen. What is this? There is a positive charge on this oxygen now. Hmm. So this is a slow step, student. This is a slow step. This is a, what is this? Nucleophilic. This is an SN2 Okay, sir. nucleophile attacking the electrophilic carbon. Water out. Water out. Because water is Yes, a sir. good living group. It will be out. So this will be a slow step, students, which will be the rate determining step. Now this is unstable. This is unstable because there is a positive charge on the oxygen. So this is the second step is the SN2 or attack of the alcohol on this positive carbon. Then in Yes, sir. step three, what will happen, student? This is unstable. Oxygen is in need of electron. It will take these electrons and proton will leave. This is called Hmm. deprotonation. Yes, sir. Proton. Deprotonation will take place, students. The result of this will be CH3, CH2O plus there is an electron and CH2, CH3. This will also be fast because there is a lot of water. Water can take this, and this will electron pair will be taken by this oxygen. It is positive, and this will leave. H plus will leave from here, student. What is the product? O, CH2, CH3, H plus. H plus was acid. Yes, sir. It came here, it comes back. Acid is Hmm. always regenerated in the end of the reaction. Therefore, student, this is the mechanism for the conversion of ethanol into ethoxyethane. So this is happening at 413 Kelvin. In exam, we have to write step 1, step 2, and step 3. 2 years back, this question was given, and I believe this question can be given again, students. So you will note down all the steps. If you have doubt, you can ask me, student. Okay, sir. Therefore, we are saying when acidic dehydration of alcohol is done, there are two things which are happening. Competition takes place between elimination and SN2 reaction. So SN2 reaction will also be there, and alkene formation will also be there. Some alkene will also be formed. And the mechanism of the two is different, as you can say, alcohol, and it depends on the temperature. It depends on the temperature. And Yes, sir. at higher temperature, elimination proceeds more than this nucleophilic substitution. And at lower temperature, students, when the temperature is low, then you will get the ether. What is the temperature here? 413 Kelvin. So this is a point to be noted. Very, very important reaction. Very, very important reaction.
Note down. I will tell you more points about this. After you note Going to down, copy into as a copy. you are copying. Yes, sir. Yes, sir. Important question for the paper. Putting Hmm. red mark for this. It can come anytime. Yes, sir. Done. Very important, student. Important. This question is repeatedly asked. So here we are now talking of the preparation of ether, student. And the first one is a very important question. Hmm. Yeah, alcohol, high temperature, alkene, when you add H2SO4 or any protic acid, and at low temperature, ether. So, Hmm. lot of questions can be there on this. Important. Okay, let us proceed further, student, further. We'll give you some more important reactions about this. Let me take some, uh, I want some slide, which is free slide, for discussing more mechanisms of the. Okay, sir. Now we're getting the slide, taking up the slide board, which is totally open, because students, we are discussing very important points. Hmm. Always keep on interacting with me. Pay attention to each and every word I say, even because that could be a question in the paper. I am saying all my students know very well that there is a lot of discussion on question answers in every lecture. Yes, sir. If you will be very careful and you will note down, then you will get full marks in exam, because these questions are coming, repeatedly coming. And by for learning, I am always saying to all the students, organic to be not to be crammed, students. Chemistry is not to be crammed. It is to be learned. It is to be understood. The basic things we should know how the reaction takes place. That is why I shown the mechanism, and it was 2 marks question in the paper. Now you are saying what you are saying. Okay, you are saying, sir, CH3 CH2OH. This is my Hmm. alcohol, ethanol. Okay? Yes, sir. You are reacting at 413 Kelvin. You are getting Hmm. product CH3 CH2O CH2 CH3. What is Okay. this? Ethoxy ethane, Hmm. or you can say diethyl ether. This is a common Okay, name. sir. Yes, sir. They can give common name also in the paper, no problem, because it's not a big compound, ordinary, easy one, and used a lot. So what is happening? We know the mechanism now. What type of reaction is this? This question was given. What type of mechanism is this? Tell me. I'm not asking to write the complete mechanism, but what is this known as in chemistry? SN2, Yes, sir. bimolecular nucleophilic substitution reaction. Which is a nucleophile here? What nucleophile is there? CH3 alcohol, Hmm. H3 CH2O. This is a nucleophile. This one. Okay, sir. See this. What is this alkoxide group? This is acting as a nucleophile. It has a lone pair of electron. It can, but where it will attack electrophilic carbon. Electrophilic carbon. Hmm. So why do we add? Question number one. Question number two. Why do we add acid? H plus. What is the role? Yes, You sir. have seen, if I don't add acid, then what will happen? Then the carbon will not be electrophilic. Okay. Or to increase the electrophilicity of carbon. Yes, sir. So what we have done, we have increased the electrophilicity of the carbon, students, attached to OH group. That is why protonated alcohol, student, Hmm. is an electrophile. Okay, sir. So when I discussed alcohols, I told you this question is also important. We have answered. Answer one, answer two. Every question, answer. You got it. Answer one, Hmm. SN2 reaction. Answer two. Protonated alcohol has electrophilic carbon. Yes, sir. Where the attack will take place. Where the attack will take place. Now you are saying there is a competition, student, going on. Hmm. Competition शुरू हो गया. क्या? There are two things. Either elimination
or SN2 reaction. Now, which will Okay. be there? Which will dominate? This or this? This or this? It depends on what type of alcohol I am using, Hmm. student. So, tell me, if I use 3-degree alcohols or 2-degree alcohols, students, then they are more likely to undergo elimination. Hmm. Important point. Yes, sir. They will go elimination more readily, students, because the reaction proceeds through SN1 reaction, which is involves the formation of a carbocation. Elimination reaction proceeds through SN1 mechanism, carbocation. Hmm. Which carbocation is more stable? 3-degree more stable than 2-degree, more stable than 1-degree. Okay, sir. You know about it. So this is a point to be noted. So, but this method will be more suitable for Hmm. preparation of student. What type of alcohols? Preparation of this method, which we have said, dehydration of alcohols, will be best for most suitable for, I'm saying, most suitable for ethers which have primary, which Yes, have sir. student primary alkyl groups. Primary alkyl groups. Hmm. What I mean to say, SN2 reaction will take place, supposing the nucleophile Hmm. has to attack the carbon. So thus, what I'm trying to say, primary means what, student? That you have small groups attached here. Hmm. If this is supposing something like this. Now these atoms are small. What I am saying, this ethers which we prepare, it is suitable for primary alkyl groups only. Primary Hmm. alkyl groups only, student, because Yes, sir. there will be less steric issue, less steric problem, because Hmm. this carbon should be unhindered. Okay. It should be having small groups. Then only the nucleophile can come and attack. Hmm. Nucleophile. It has to come and attack this carbon. If this is surrounded by big groups, then what will happen? There will be steric hindrance. There will be Uh, steric hindrance. So 2-degree and 3-degree, there will be lot of steric hindrance. hmm. Hindrance, student. So this will not be suitable. Not suitable for 2-degree and 3-degree. And Hmm. best suitable for primary alkyl groups. Okay, The sir. smaller the groups, more easy is the SN2 reaction. We already know, student, when Uh, we discussed SN2, we said 1-degree, 1-degree more than 2-degree, more than 3-degree. That we told you hmm. for SN2. In the case of haloalkanes also, yes or no? Yes, sir. So the important point, it should be unhindered. And second thing, you are seeing the temperature should be low. Hmm. Temperature should be low, student. Because if you have high temperature, more energy is available Uh, and elimination takes place. More okay, elimination sir. takes place. So we can see that the dehydration of secondary and tertiary alcohol will give you ether or alkene. Tell me, if I do the dehydration of 2-degree or 3-degree alcohol, what product you are going to get? I'm saying, if I have 2-degree or 3-degree alcohol, student, okay, and if I add H2SO4, then you are likely to get alkenes. Hmm. This reaction will take place. It proceeds through SN1 mechanism. You know about it. Elimination elimination proceeds substitution. But if I use 1-degree alcohol, you use H2SO4 and you use lower temperature, Uh, then what you are is the product SN2 mechanism and ether. Got it? hmm. Noted? Yes, sir. This is a important point because question could be asked here. Whenever there is a competition between two things, either of the two can happen. Hmm. But if I change the conditions, student, then naturally different products will be formed. ठीक है?
So Okay, sir. substitution, this is a substitution, this is a substitution, and the first one is elimination, then which will dominate, this or this depends on the reaction conditions. Yes, sir. And what type of alcohols you will choose, students? Question answered, yes or no? Very important question for the paper, students. Keep on. देखो, दिमाग लगाना है, Okay, sir. समझना है, पे अटेंशन. हाँ, दिमाग नहीं लगाया तो आउट है मैं एग्जाम में. क्या व्हाट आई विल डू, रट्टेबाजी नहीं चलेगी. मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि दो स्टूडेंट्स हु आर क्रैमिंग एंड मगिंग विल नॉट सक्सीड इन पेपर. दो Yes, स्टूडेंट्स sir. who are understanding basic concepts, learning very properly, student, they will be able to solve every question in the paper. तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, आप दिमाग लगाइए मेरे साथ. मुझे बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, इतना आसान नहीं है मेरा काम. Because I have to explain to the students now. I have to explain to the students. I have to apply my mind to. Lot of energy is needed. तुम देख रहे हो मैं कितना दिमाग लगाता हूँ, पूरा Yes, sir. ताकत लगा देता हूँ. तो मेरे को एनर्जी बहुत चाहिए होती है इसके लिए. और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कीप ऑन इंटरेक्टिंग विद मी, कीप ऑन टॉकिंग विद मी, और तुम्हारी भी एनर्जी बनी रहे और मेरी भी ताकत बनी रहे. मैं जो पढ़ाऊंगा वो ऐसा है कि किताब खोल के बैठे हैं, बस कुछ भी नहीं हुआ, समझ में कुछ भी नहीं आया, रिएक्शन लिख दूंगा, इट हैज नो मीनिंग. Exactly. रिएक्शन तो ऑलरेडी रिटन इन द बुक है, तो सीखा क्या मैंने? अरे ये सारी बातें नहीं बताई तो क्या सीखा मैंने? यही तो प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स की. हाउ विल आई डू? Every student has the NCERT book, so what is the problem? Course is NCERT, not coming from anything outside, but what questions will be framed, how they will be framed, and each and every word has to some meaning. Can we understand them? That is my point. But I am trying to do decode every word which is written in NCERT book and other books, which are additional books required for your exams. तो सारा पेपर NCERT से आएगा, लेकिन उसको समझना है. That is my point. अब देखो ये मेथड में प्रॉब्लम आ गई. दिस मेथड इज लिमिटेड ओनली फॉर विच अल्कोहल 1 डिग्री, बिकॉज एलिमिनेशन इज आल्सो टेकिंग प्लेस. देन वी हैव टू फाइंड सम अदर मेथड. तो अब दूसरा मेथड कौन सा है? जो अब मेथड बता रहा हूँ वो पेपर में 100% आएगा. इसी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं सारे. अब हम सेकंड मेथड पर आ गए. बिकॉज the bimolecular dehydration is not appropriate, student, for the preparation of certain types of ethers. We have seen even ethyl methyl ether will be difficult to prepare. तो हम कैसे बनाएंगे इनको? तो अगर हमें देखो यहाँ पर ये ईथर तो बन गई थी, ये वाली ईथर we have been able to make. देख रहे हो? Yes, sir. इसमें you can see both the groups are same on both the sides. दोनों ग्रुप क्या है? सेम. ये Yes, और sir. ये सेम है. इसको क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक ईथर. What is a symmetric ether, student? When you have same group on both the sides. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि same groups are attached on both the sides, student. It is an example of symmetric ether. But supposing I want to prepare ether like supposing if I have CH3 O CH2 CH3, so how will you cannot prepare by this method. You cannot prepare by using this method, because what alcohol you will use, then tell me. There will be mixtures which will be formed. और मुश्किल पड़ेगी, ये नहीं बनता इससे. तो फिर हम क्या करें? So I can say that dehydration of alcohols by acid, protic acid at low temperature is not suitable for preparation of mixed ethers. इनको क्या बोलते हैं? अनसिमेट्रिक ईथर्स कहते हैं, स्टूडेंट्स. ठीक है? यस सर. अब क्या करेंगे फिर? जब वर्ड साइंस में क्या करते हैं हम? अब और कोई मेथड चूज करते हैं. फिर आपको इससे बड़ा मेथड कौन सा है फिर जो पेपर में आएगा? अब मैंने कह दिया पेपर में आएगा. अब इसका मतलब आप समझ गए हैं कि मैं यू हैव टू पे लॉट ऑफ अटेंशन कि ये तो आएगा ही आएगा, जो अब मैं बात बताने जा रहा हूँ. तो देखते हैं हम कौन सा मेथड है. चलो, अब मैं जो नाम बता रहा हूँ स्टूडेंट, इसको ध्यान से देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. विलियमसन था एक,
विलियमसन साइंटिस्ट इसके नाम से है, विलियमसन सिंथेसिस। ये इंपॉर्टेंट है, कलर ही चेंज कर रहा हूं मैं। लो, ये वाला मेथड पेपर में आएगा, विलियमसन सिंथेसिस। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड फॉर द प्रेपरेशन ऑफ। इससे क्या फायदा है कि हम सिमेट्रिक एंड अनसिमेट्रिक बोथ ईथर्स बना सकते हैं, दोनों ही ईथर्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये बहुत वर्साटाइल है, इसीलिए पेपर में आएगा। अब इसका मेथड कोई मुश्किल नहीं है। हम क्या करते हैं इसमें, अल्काइल हैलाइड है ये क्या है स्टूडेंट, अल्काइल हैलाइड, ठीक है, या हेलो एल्केन। इसको हम रिएक्ट करते हैं सोडियम एल्कोक्साइड के साथ। सोडियम एल्कोक्साइड क्या होता है स्टूडेंट, ये क्या है, व्हाट इज दिस, सोडियम, इसको मैं आर डैश कर देता हूं क्योंकि यहां पे आर लगा हुआ है, सोडियम एल्कोक्साइड। इसको कहते हैं सोडियम एल्कोक्साइड। देख रहे हो, ये नेगेटिव है इसमें, ये पॉजिटिव है। ये हमारी जितनी भी स्टडी चल रही है, मैं तुम्हें क्या करा रहा हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टूडेंट, बहुत सारे तुम मेरे लेक्चर्स देख रहे हो, कितने सारे आ रहे हैं। मैं साथ में यही कह रहा हूँ, पॉजिटिव कार्बन नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन इधर से चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को चला रहा हूँ, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अटैक करवा रहा हूँ किसी न्यूक्लियोफाइल का, और इलेक्ट्रॉन्स हैं पाई, उनके ऊपर अटैक करा रहा हूँ इलेक्ट्रोफाइल्स का। इसी तरह से रिएक्शन कर रहा हूँ। यस सर। तो सारी रिएक्शन में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर से उधर घूम रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, अगर इफ आई डोंट नो हाउ टू ड्रा द लीव स्ट्रक्चर, फिर मैं क्या लर्न है, मैं रट्टेबाजी करूंगा क्या। अब मेरे को पता लग गया कि ये लीव स्ट्रक्चर है, यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, देख रहे हो, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। नेगेटिव कहाँ पे अटैक करता है, पॉजिटिव के ऊपर। इतना हमें पता लग गया कि पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट होते हैं, कोई सेम वाले चार्ज वाले तो रिपेल करते हैं। तो अगर न्यूक्लियोफाइल होगा तो वो पॉजिटिव सेंटर पे जाएगा, यस और नो। यस सर। तो अब यहाँ पे क्या होने वाला है स्टूडेंट्स, ये रिएक्शन देख रहे हो, ये यहाँ पर क्या होता है, देखो ये तुम ऑलरेडी कर चुके हो। ये क्या लगा हुआ है, मान लो Cl लगा हुआ है, और यहाँ पे मान लो H लगा, कोई भी चीज लगी हुई है, चलो। अब हमें पता था ये कार्बन पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, क्योंकि Cl क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये पॉजिटिव मिल गया मुझे, अरे डेल्टा पॉजिटिव मिल गया। तो यहाँ पर क्या अटैक होने वाला है, जल्दी से बताओ, यहाँ पर कौन आने वाला है, नेगेटिव वाला। तो नेगेटिव कहां पर है हमारे पास, ये है नेगेटिव, बोलो ये नेगेटिव दिख रहा है, इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है ऑक्सीजन के पास। तो ये क्या करेगा, ये कहां जाएगा, यहां पर, और ये आउट हो जाएगा, होएगा। यस सर। तो अब क्या होगा, Cl माइनस था, Na के साथ चले जाएगा। लो, Na और Cl दोनों में प्यार हो गया, ये प्लस है, ये माइनस है। सारी केमिस्ट्री ऐसी बता रहा हूं मैं तुम्हें, प्लस माइनस इकट्ठे हो गए, चलो साइड पर, इनको तो हो गया शादी प्लस का माइनस के साथ। अब बाकी क्या बचा फिर, ये तो आउट हो गया, ये आ गया, तो फिर क्या बना आपके पास, कुछ ऐसा बन गया। यहाँ पे देयर कैन बी एनी अदर ग्रुप्स व्हिच विल टेल यू जस्ट नाउ। ये आ गया OR' लग गया। तो ये कौन सी रिएक्शन हुई फिर, SN2 ही तो हुई। यस सर। तो यहाँ पर वी आर सेइंग इट इज एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है। यस सर। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन से वाली, SN2, ये हमने पढ़ी है, हमने पढ़ी थी हेलो एल्केन्स में पढ़ी थी, यस और नो, बोलो आपको याद आ गया होगा। देखो मैं हर रिएक्शन को बहुत कंप्लीटली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कोई डाउट होगा तो यू कैन आस्क मी, नो प्रॉब्लम। यहां समझ में आई स्टोरी। यस सर। तो अब अगर मैं R' को चेंज करता जाऊंगा तो क्या होगा, डिफरेंट इथर्स बनेंगे, और यहाँ पे भी मैं चेंज करता जाऊंगा तो कितने, बहुत सारे इथर्स बन जाएंगे। यस सर। तो यहाँ पर क्या एडवांटेज होने वाली है कि जो अनसिमेट्रिक इथर्स हैं, दे कैन बी इजिली प्रिपेयर्ड, ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन प्रॉब्लम एक और है, क्या प्रॉब्लम है, अब ये तुमने कह दिया कि ये SN2 रिएक्शन है, बोलो है या नहीं है, जल्दी से बताओ। है सर, है सर। इफ इट इज SN2 स्टूडेंट, देन व्हाट इज द कंडीशन फॉर ए, कौन से होती है अल्काइल हैलाइड जो SN2 रिएक्शन करते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री, जल्दी से बताओ। सर 2 डिग्री। कहाँ पे लिखा मैंने 2 डिग्री, तुमने एलो एल्केन्स में पढ़ा था, तो फिर अब भूल गए सारा क्या।
अरे 3 टाइप के ही तो बताए थे मैंने अल्काइल हैलाइड भी, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो कौन से अल्काइल हैलाइड है जो SN2 वाला सबसे हाई हाई रेट किसका था? सर आई थिंक 3 डिग्री। 3 डिग्री तो SN1 में चले गया था। हाँ फिर ठीक है ठीक है ठीक है, फिर इस पे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री फिर, हाँ ऑर्डर में सबसे थे। यहाँ पे 1 डिग्री वाले जो होंगे अल्काइल हैलाइड, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड जो होते हैं स्टूडेंट्स, हम्म वो रिएक्ट करते हैं। आप समझा करो, द रिएक्शन इन्वॉल्व्स हम्म SN2 अटैक, देयरफॉर एल्कोक्साइड आयन विल इज लाइकली टू, एल्कोक्साइड आयन जो है मेरा स्टूडेंट, एल्कोक्साइड आयन ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल। हाँ न्यूक्लियोफाइल है स्टूडेंट कौन सा? OR माइनस। इसी को तो, यही तो नेगेटिव वाला है ये। अब ये वाला अटैक कर रहा है, तो ये बेस्ट अटैक किसके ऊपर कर सकता है? प्राइमरी के ऊपर। हम्म तो फिर यहां पर भी एक प्रॉब्लम आ गई कि ये बेस्ट, ये जो अल्काइल हैलाइड है स्टूडेंट, इसकी चॉइस इंपॉर्टेंट है। हम्म तो चॉइस ऑफ RX मींस इट इज सुटेबल फॉर 1 डिग्री, मतलब प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। हम्म अगर मैंने प्राइमरी अल्काइल हैलाइड की वजह 2 और 3 डिग्री कर दिया तो फिर SN2 रिएक्शन तो बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि स्टेरिक हाँ हाँ हिंड्रेंस हो जाएगी। आप देखिए कि मैं क्या कह रहा हूँ, ये नोट कर लिया सारा, तो मैं आगे चल रहा हूँ। यस सर यस सर। कर रहे हो तो कर लो। नहीं सर वही खटू मत था सर। एवरी पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी पे क्वेश्चन आने वाले हैं। जो भी मैं बता रहा हूँ मैं बहुत ज्यादा दिमाग लगाता हूँ, क्वेश्चन आने वाले हैं। देखो अभी क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ जाएगा, स्क्रीन पर भी रखूंगा। हम्म अब देखो स्टूडेंट्स कि मैंने ये कहा है, क्या बोला मैंने? मैंने ये कहा कि विलियमसन सिंथेसिस जो है, इसमें पहला पॉइंट तो मैंने ये बताया कि RX जो है वो रिएक्ट्स विद R-ON। ठीक है, हाँ बनेगा क्या? ROR-, ठीक है, यस सर। और NaX। ये तो सिंपल है रिएक्शन, इसमें कोई दिक्कत नहीं आई। हम्म सेकंड मैंने ये कह दिया कि RX जो है इसकी चॉइस इंपॉर्टेंट है, दिस शुड बी 1 डिग्री और प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। ठीक है, हम्म बिकॉज इट इज SN2 अटैक ऑफ OR एल्कोक्साइड आयन। इसको क्या बोलते हैं? एल्कोक्साइड न्यूक्लियोफाइल। हम्म ठीक है, तो ये एल्कोक्साइड न्यूक्लियोफाइल है। यस सर। अगर ये प्राइमरी नहीं है स्टूडेंट्स तो क्या होगा? 2 डिग्री एंड 3 डिग्री RX, there will be large steric hindrance हम्म for the incoming nucleophile। ठीक है, यस सर। तो रिएक्शन फिर बहुत स्लो हो जाएगी, फिर रिएक्शन होगी नहीं। तो फिर हमें चॉइस करनी पड़ेगी, द अल्काइल हैलाइड विच आई चूज शुड बी 1 डिग्री स्टूडेंट, हम्म और दिस रिएक्शन विल नॉट बी वेरी गुड। और फिर क्या होगा? अंडर, तो स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगी। फिर क्या होगा? इन सच केसेस, इन 2 डिग्री और 3 डिग्री एलिमिनेशन हो जाएगी। हमें बताया कि एलिमिनेशन भी हो सकती है। एलिमिनेशन जो होगी स्टूडेंट, वो compete करती है, हम्म competes with SN2 substitution, यस सर। क्योंकि एलिमिनेशन SN1 से होती है और ये SN2 से होती है। तो हम्म फिर तो प्रोडक्ट ईथर नहीं बनेगा, वो तो एल्कीन बन जाएगी। ओके। बोलो सही है गलत है? सही है सर सही है। अब देखो, अब मैंने क्वेश्चन दे दिया पेपर का, एक पेपर में उसने लिखा, क्या लिखा उसने पेपर में? लिखा स्टूडेंट्स CH3 CH3 Br प्लस Na प्लस OCH3। ठीक है, हम्म मैंने पूछा इज दिस रिएक्शन suitable for synthesis of
कौन सी ईथर बना रहा हूं मैं? CH3 C CH3 CH3 O CH3। यस सर। अगर ऐसे स्टूडेंट तो यही कहेंगे ना कि ये लो जी, इसको हटा दो, ईथर बन गई ये वाली। तो अब आपने आंसर करना है, क्वेश्चन आ गया पेपर में, बताओ क्या, व्हाट इज योर आंसर? कौन सी रिएक्शन डिस्कस कर रहा हूं मैं स्टूडेंट्स? विलियमसन। अब बताओ इसका क्या बनेगा? इसमें क्या होगा? ये कौन सा, विच एल्काइल हैलाइड इज दिस? विच एल्काइल हैलाइड इज दिस स्टूडेंट्स? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, कौन सा है? सर ये है 3 डिग्री। 3 डिग्री है। 3 डिग्री, तो बताओ कि 3 डिग्री क्या बनाता है ईथर? टेल मी व्हाट विल हैपन। अभी मैंने ऊपर व्हाट आई हैव रिटन इन द टॉप, व्हाट आई हैव रिटन फॉर द विलियमसन सिंथेसिस। स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द पेपर। जल्दी से बताओ कि क्या ये रिएक्शन सही है या गलत है? सही है, तो सही है। सही है। हम्म कैसे सही है बताओ? यहाँ पे इतने बड़े बड़े ग्रुप लगे हुए हैं, क्या ये इसके अंदर आ सकता है? क्या लिखा मैंने? व्हाट आई हैव रिटन ऑन द टॉप ऑफ दिस, क्या लिखा? इतना बड़े बड़े वर्ड्स में मैंने लिखा, फिर क्या लिखा मैंने? क्या नोट किया तुमने? ये सही कहां पर है? दिस इज नॉट सुटेबल फॉर ईथर। वाई? बिकॉज SN2 रिएक्शन 3 डिग्री की तो होती ही नहीं, ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। इसमें स्टेरिक है, बहुत ज्यादा क्राउडिंग, स्टेरिक हिंड्रेंस है। These are some bulky groups. How will it come and attack this carbon? नहीं होता। लिखा नहीं ऊपर मैंने 2-3 डिग्री अल्काइल हैलाइड स्टेरिक हिंड्रेंस। तो फिर इस केस में क्या होगा फिर? एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन होगी तो क्या प्रोडक्ट बनता है? जल्दी से बताओ। यहां पर क्या हो जाएगा फिर? एलिमिनेशन। If elimination will take place, student, then what will happen? Which product will be formed? इसमें what alkene will be formed? बताओ उसका नाम जल्दी से। Important question है for the paper student. You have done this earlier also. Br और H एक निकलने वाला है इसमें से बाहर, -HBr। तो फिर प्रोडक्ट क्या बनेगा? अगर मैं लिखूं CH3 C डबल बॉन्ड CH2, ये H और Br निकल गए, फिर क्या बचा फिर? ये वाला प्रोडक्ट। ओके, तो ये इसका क्या नाम है? 1 2 3, ये क्या होना फिर? व्हाट इज द IUPAC नेम? एल्कीन बन गई। प्रोडक्ट क्या है? एल्कीन। यस सर। ईथर थोड़ी बनी है इसमें। This has produced alkene, student, and not the ether. Question important for the paper, important question। बात समझ में आई कि डाउट है? यस सर। तो यहाँ पे क्या बन गया? एल्कीन बन गई है। एलिमिनेशन हो गई है। क्या हो गया? एलिमिनेशन। तो यहाँ पर SN2 रिएक्शन नहीं हुई, क्योंकि SN2 is best only when alkyl halide is 1 डिग्री। बात समझ में आई? अभी तक मैं क्या कहना चाहता हूँ, नोट कर लिया? कॉपिंग सर, 2 मिनट्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ पेपर के लिए। ओके, थैंक यू सर। हो गया? यस सर। अच्छा, आगे देखो अब क्या हुआ। तो फिर आपको एक क्वेश्चन उसने ये दे दिया पेपर में, वो क्या कह रहा है? चूज appropriate reagents to prepare, क्या बनाना है? CH3 C CH3 CH3 O C2H5। अब ये ईथर आपको बनानी है स्टूडेंट। इसके लिए बताओ कि कौन क्या क्या कैसे करोगे? यस सर। अब कौन सा मेथड यूज करना है? विलियमसन। अब यू आर गेटिंग 1 मिनट टू आंसर द क्वेश्चन स्टूडेंट बिफोर आई आंसर।
विलियमसन सिंथेसिस बनानी है और यू हैव टू प्रिपेयर दिस ईथर। तो विलियमसन सिंथेसिस का फार्मूला क्या है? RX प्लस R डैश हुआ Na बेस। तो फिर तुम, मेरे को 1 मिनट मिला, पहले तुम सोच लो, देन आई विल डिस्कस। All the questions I am talking are important for papers. Let me tell you very clearly, students. Okay, sir. क्या क्या आना है हमारे पास? एक एल्काइल हैलाइड है और दूसरा क्या है? R डैश O Na बना। हाउ डू वी मेक इट? लाइक दिस, ठीक है। और क्या बनेगा फिर? जो भी NX बाहर आ गया। अब R यहां पर देखो, एक ये वाला ग्रुप है, एक ये वाला ग्रुप है, 2 ग्रुप है मेरे पास, दिख रहे हैं? यस सर। यहाँ पर है और ये वाला ग्रुप है ये। तो मुझे चूज करना है एल्काइल हैलाइड और दूसरा एल्कोक्साइड आयन। एल्कोक्साइड आयन यूज करना है ये वाला। तो अब कौन सा R यूज करूंगा, कौन सा R डैश यूज करूंगा, दैट इज द ओनली पॉइंट हियर। तो फिर हमने क्या क्या है आपको कि एल्काइल हैलाइड कौन सा होना चाहिए? बोलो। प्राइमरी। प्राइमरी का मतलब 1 डिग्री। यस सर। तो फिर कौन सा एल्काइल हैलाइड यूज करूंगा यहाँ पर इस रिएक्शन के लिए? कौन सा प्राइमरी एल्काइल हैलाइड बनेगा? ये वाला CH3CH2Cl मैंने यूज कर लिया, ये 1 डिग्री है। यस सर। और फिर क्या बचा? ये वाला, इसको मैं एल्कोक्साइड बना दूंगा। ओके सर। CH3CH3O माइनस Na प्लस। अब रिएक्शन होगी, अब हो जाएगी। यस सर। ये यहाँ पे तो अटैक होना है इस कार्बन पर। अब ये छोटे ग्रुप है, स्मॉल ग्रुप्स हैं, तो ये इजीली इसके अंदर आ जाएगा अटैक। ओके सर। तो क्या होगा फिर? यहाँ से ये न्यूक्लियोफाइल है, ये इसके ऊपर जुड़ जाएगा। तो अब क्या बनेगा फिर? CH3CH2O और ये लग गया CH3 और CH3 बन गया। यस सर। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है मैंने जो बताई है। देखो, हमें हमेशा 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड चूज करो और जो मोटे ग्रुप है वो एल्कोक्साइड आयन में लेके। ओके सर। यहाँ पर सोडियम एल्कोक्साइड वाले ग्रुप में। तो मैंने ये टर्शियरी ग्रुप कहाँ लगा दिया? यहाँ पर, ठीक है। यस सर। टर्शियरी, ये टर्शियरी बुटाइल वाला ग्रुप है, इसको मैंने एल्कोक्साइड में ले लिया फॉर दिस रिएक्शन। अदरवाइज वो रिएक्शन एलिमिनेशन हो जाएगी। अगर इसको मैंने CH3 और Cl लगा दिया तो एलिमिनेशन विल टेक प्लेस। ओके सर। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, नोट कर लिया? ऑलमोस्ट 2 मिनट्स कॉपिंग सर। यस हो गया, कॉपी हो गया। हाँ, मेरे को एक क्वेश्चन और आ गया पेपर में। जो भी क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में डिस्कशन हो रहा है इन एवरी लेक्चर। हमें एक कंपाउंड बनाना है OCH3। ये कौन सी है? एरोमेटिक ईथर है। इसका क्या नाम है? इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। इसको क्या बोलते हैं? एनिसोल। ये एनिसोल है स्टूडेंट। ओके सर। और ये है मिथॉक्सी। वैसे ये मिथॉक्सी बेंजीन है, मिथॉक्सी बेंजीन। अब इसको बनाना है, स्टूडेंट। इसको बताओ। तुम्हें 1 मिनट का वक्त दे रहा हूँ, कैसे बनाओगे जल्दी से। चलो इसको बना लो पहले, फिर आगे चलता हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ तुम्हें। जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ स्टूडेंट, सारे आए हुए पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बता दो पहले, ताकि तब आगे चलते हैं।